Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to be talking about attachment styles and we are going to decode it in a very Gen Z manner. Also, I am not hiding from the fact that yes, I have been inconsistent lately. Trust me, I really felt that I've lost my spark, but now I am right back at it. And so I have picked up this topic based on attachment styles because I've been reading a book called as Attached, and I found this concept very interesting and worth talking about because nowadays people don't have that awareness. Eventually get curious about knowing what's your attachment style and what is your partner's attachment style. Be honest, you meet someone that you really like, उनका 2 घंटे reply नहीं आता, and then you start reaching for your phone, you're checking their last scene, you are checking their Instagram, and you go all haywire. और सब अच्छा चल रहा होगा and suddenly out of nowhere you'll think that, oh, I do like them, but I guess I need some space. If either of these sounds like you, then congratulations, you might be ruining your dating life. Today we are going to be breaking down these 4 attachment styles. Before you even start diagnosing yourself or your ex about the attachment styles that you both must be carrying, let me just tell you, this is not a permanent thing. It's not a personality label that you carry forever. You can change it with time. Attachment styles are basically patterns that are used by us when we are in closeness, intimacy, relationship, and how we experience these feelings when we are in a relationship. So let's find out which one sounds suspiciously like you. Number 1 comes one and only attachment style that we think we all are in: anxious attachment style. So anxious attachment style goes like, you like them, they like you, everything is going great, but one slight delay in their reply and then you start going haywire thinking, oh my god, what is happening? Are they not interested in me? Did I do something wrong? Are they seeing someone else behind my back? Are they cheating on me? What is going on? Or are they losing interest? Why are they online? Anxious attachment can make uncertainty feel unbearable. Basically, Gen Z term में बोलूँ तो their good morning text, they control your whole mood throughout the day. Let's jump into the next one that is opposite of the anxious attachment style, that is avoidant attachment style. Avoidant style, the person is usually like, listen, I really like you, but can we like not get too close? Might enjoy when someone is at distance whilst being in a relationship, but as soon as they get a bit close, emotionally more vulnerable, or you start to feel that, oh my god, they are being needy, they are being clingy, texting too much. Sometimes instead of communicating that discomfort, you choose to disappear emotionally. Third type of attachment style is fearful avoidant, also known as the disorganized one. ये वाले अटैचमेंट स्टाइल में 19-20 का फ़र्क है व्हेन इट कम्स टू अवॉइडेंट एंड फियरफुल अवॉइडेंट. सो फ़र्क ये है कि जो फियरफुल अवॉइडेंट वाले लोग होते हैं वो सडनली पुश एंड पुल वाले गेम में आ जाते हैं, एंड दे आर लाइक कि वन डे दे आर टू क्लोज टू इन्वेस्टेड, द अदर डे दे आर लाइक, ओ माई गॉड, आई नीड माई स्पेस, आई नीड इंडिपेंडेंस, आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी सो क्लिंगी ऑल द टाइम. As soon as the person gets close to you, you suddenly feel that urge of like taking a step back. It becomes scary and overwhelming for you. You might pull them closer and then push them away. Again, closer, away. You miss them when they are gone, but you feel trapped when they're around. This constant push and pull can confuse you as well as the person that you're with, and it is not healthy at all. Then we have the star of the show, that is secure attachment style, the emotionally stable one. They like you, they communicate, they do have boundaries, but they do not panic when you do not reply for like 3 hours. They don't disappear when things get serious, okay? ऐसा नहीं है कि वो jealous नहीं होते. It doesn't mean that you are perfect. It means that you are generally able to communicate your boundaries, your needs, and you can tolerate uncertainty, and you can stay connected without entirely losing yourself. Now let me tell you the plot twist. You do not have necessarily one attachment style throughout your life. Your relationships, your goals, your interests, and people you surround yourself with, experiences with them, it can change the type of attachment style that you carry. That can influence how you relate to people.
If you are thinking that, oh my god, I'm anxious type, oh my god, I'm avoidant type, don't use this video as a reason to label yourself, okay? Use it as a reason to ask, why do I react this way when I feel emotionally unsafe? So homework time. Just tell me at the moment which attachment style are you following. I'll give you 3 options. The first one, are you like, why haven't they replied? Or second one, why are they getting too close? So you're like, come here, okay, go away. Or you are like, लेट्स डिस्कस लाइक एडल्ट्स. तो ये चारों साइंस थे ABCD. इनमें से आप पिक करें और हमें बताएं इन कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है, आप किस टाइप के अटैचमेंट स्टाइल से गुजर रहे हैं at this moment in your life. Send this video to someone who says that, oh, I don't have any attachment issues, but has a 17 pages of mental analysis about the crush's last text. इमोशनली मैच्योर बनने के लिए मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि अपने अटैचमेंट स्टाइल को आपको डिफाइन मत करने दो. अलग अलग वर्जन होते हैं आपके एंड अलग अलग लोगों के साथ आपका अटैचमेंट स्टाइल वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंसेस विद देम. सो वो चीज़ चेंज होती रहेगी, बट जो आपका बॉटम लाइन है दैट इज़, आर यू लाइक लेटिंग योर अटैचमेंट स्टाइल कंट्रोल योर बिहेवियर? आर यू अनएबल टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स with emotional maturity? Are you able to like not use mind games to deal with such situations wherein you are confused कि मुझे ऐसे डर लग रहा है, इमोशनली मुझे ऐसे ओवरवेल्म लग रहा है, बट आई एम लाइक स्केर्ड टू डील विथ इट, सो लेट मी लाइक ट्रॉमेटाइज द अदर पर्सन. सो हाउ टू डील विथ सच सिचुएशंस, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है रादर देन कि हम कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है, और या फिर ऐसे ही लेबल कर देना कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं भैया, हमसे तो कोई उम्मीद ही मत रखो चेंज होने की. सो हैव दैट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, हैव दैट स्कोप कि आप फ्लेक्सिबल रहो, डोंट बी सो रिजिड, डोंट बी लाइक कि आप चेंज ही नहीं होना चाहते, इम्प्रूव ही नहीं होना चाहते. मुझे उन लोगों से सबसे ज़्यादा कंप्लेन है जो मान लेते हैं कि भैया हम तो ऐसे ही हैं, टेक इट और लीव इट. ऐसे नहीं चलता है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू सम अप दिस वीडियो बाय सेइंग दैट हीलिंग इजंट अबाउट बीइंग इमोशनलेस, इट इज़ about how to handle your emotions without hurting someone else or abandoning yourself. We need to learn to tolerate the space that everyone requires in their life. ऐसा नहीं होता कि when you're in a relationship तो आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दो या अपने काम को छोड़ दो या अपने रूटीन को छोड़ दो, अपने मी टाइम को छोड़ दो. इक्वली हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को आपको देना है टाइम. एंड ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है. मैंने भी पास्ट में कई बार ऐसे हुआ है कि मैंने आई लॉस्ट माई स्पार्क, आई फील लाइक आई एम लूजिंग माई सेल्फ इन दिस रिलेशनशिप, कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें साइड में करके माई होल लाइक द पर्सन हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स. सो वो चीज़ नहीं होने देना है. एंड मुझे तो ये टाइम जो मी टाइम जो मिलता है उसमें मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आया. दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो कि मे बी दिस वीडियो विल हेल्प यू एज वेल इफ़ यू आर इन सच सिचुएशन जहाँ पे आप रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से टाइप के एंक्शियस हैं या अवॉइडेंट हैं या आपके पर्सन किस टाइप में आते हैं. एंड you are kind of figuring it out, and once you figure this out it becomes easier as you become self aware. ये वीडियो का सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस लाना ही पर्पस है. एंड एडवाइस इज़ ओनली दैट यू डोंट हर्ट द अदर पर्सन, डोंट बिकम इमोशनलेस, एंड लॉजिक को भी एकदम छोड़ नहीं देना है. सो या आज का वीडियो एंड होता है. एंड ऐसे वीडियोस मैं आगे भी बनाना चाहती हूँ एंड आई ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट. अपॉलॉजीज फॉर नॉट स्टेइंग कंसिस्टेंट लेटली, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. Bye. Also, if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up, like, share, subscribe to my channel and comment your views below. And also let me know your attachment style. आपको क्या लगता है, कौन से वाले हैं आप? ABCD में से नीचे कमेंट करिए. See you in my next one. सारंग. Bye.